Okay, I think we are ready to begin. Welcome to another live stream. Today's topic is Poisson distribution related in um title. What I'm going to do is I'm going to try to solve as many questions as I can of the worksheet on Poisson distribution. Um okay, let's begin with this question. Okay. Let's see what this question has. It says it is known that on average 1 in 300 flowers of a certain kind are white. Um, a random sample of 200 flowers of this kind is selected. So this looks like a binomial distribution to start with. Use an approximating distribution to find the probability that more than one flower in the sample is white. Okay, so I want to use an approximate. I'm going to convert the Poisson to a binomial to a Poisson and try to solve. So P is 1 out of 300 and N is 200. So my lambda is going to be NP. Just 200 times 1 over 300. That's 2 over 3. I want to use an approximating distribution to find more than one flower. So more than one flower, I can just simply do 1 minus probability of 0, 1 minus e power minus 2 over 3. Let's check if we get the correct answer. E power 0.487. More than once, I also have to subtract 1. I get 0.144. Okay, part B, justify the approximating distribution used in part 1. So you're going to say that n is large, is greater than 50, p is small, that is 1 out of 300, which is less than 0.1, and np, which is 2 over 3, is less than 5. Np and nq are conditions that use for conversion from binomial to normal. Okay, np and nq should be greater than 5. Here part C में it says the probability that a randomly chosen flower of one kind is white is 0.02. A random sample of 150 of these flowers is selected. Okay, use an approximate distribution to find the probability that the total number of white flowers in the two samples is less than 4. तो पहले इस sample को भी convert करना पड़ेगा. अच्छा इसका जो है वो N150 है और इसका lambda जो है वो 0.02 है. Now because these samples are of different वो total, तो मैं सिर्फ lambda को जो है वो ऐड कर लूँगा 0.02 इंटू RS3. ओके, मैं दोनों की lambda जो है वो ऐड कर लूँगा. Here's this is going to be absolute.
वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अंश? Okay, yeah, 11 over 3, and then but I want to find that the total number of white flowers in the two samples is less than 4. So less than 4. I want the probability of 0, 1, 2, 3. So e power minus 11 over 3 plus 11 over 3 e power minus plus e power minus 11 over 3, 11 over 3 squared over 2 factorial plus e power minus 11 over 3, 11 over 3 cubed over 3 factorial. Okay, so the answer does come out to be 0.501. Okay, and is the correct answer. Let's move on to question number 2. Long time no. Yes. Okay, question number 2. Question number 2 is about the random variable x has the distribution binomial. यदि आप use a Poisson distribution to find the probability between 2 and 6. So I want to find the probability of 3, 4 and 5. Okay. मेरे पास जो लैम्डा होगा वो फिर से होगा 300 इंटू 0.01. इस 300 इंटू 0.01 वो 3 आ जाएगा. Stop working. ये 3 आ जाएगा. तो मुझे probability निकालनी है e power minus 3 into 3 power 3 over 3 factorial plus e power minus 3 into 3 power 4 over 4 factorial e power minus 3 into 3 power 5 over 5 factorial. Okay, those are the probabilities that I will look for. मैं इसको जो है वो कैलकुलेटर पे ही थोड़ा इंटेलिजेंटली कैलकुलेट कर लेता हूँ. मैं पहले क्यूमुलेट कर लेता हूँ अप टिल 5. और लैम्डा में लगा देता हूँ 3.916 आ रहे मेरे पास. और मैं फिर 2 तक क्यूमुलेट कर लेता हूँ. 3 लगा देता हूँ. ओह, अभी लेवल आ गया. ओके, ये मैंने कुछ क्यूमुलेट करके आंसर निकाला है 0.916 माइनस 0.423. 0.493 फाइनल आंसर आ रहा है. Okay, the random variable y has the distribution this. Find lambda. उसमें 0 और 2 की वैल्यू 2 के आंसर जो है वो इक्वल हैं. तो मैंने कहा probability of y equals to 0 equals to probability of y equals to 2. ये हो जाएगा e power minus lambda into e power minus lambda lambda square over 2 factorial. तो आई थिंक ये सिंपल है. लैम्डा स्क्वायर जो है होगा 2 के बराबर हो जाएगा. लैम्डा इक्वल्स टू रूट ऑफ 2. ओके, तो लैम्डा आ रहा है 1.414. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे 1.41. पार्ट 3 पे आ जाते हैं. पार्ट 3 कहता है
The random variable z has the distribution this, and the probability of n and n plus 1 are equal. N is less than n plus 1. Write down an inequality in n. तो मैं कहूँगा probability of z equals to n is less than probability of z equals to n plus 1. तो ये बन रहा है e power minus lambda into lambda power n over n factorial. सही है, इस पर lambda जो है वो 5.2 है मेरे ख्याल से. That's what the question says, 5.2. और ये बन जाएगा 5.2 पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1. ये इनइक्वालिटी है satisfied by lambda. So here write down an inequality satisfied by in n nth or otherwise find the largest possible value of n. फिर अगले पार्ट में मुझे इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा? I will take this to the other side and divide. तो मेरे पास बेसिकली बन रहा है 5 पावर 2 n फैक्टोरियल और ये 5 पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल है ये. तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, ये n फैक्टोरियल इधर आ जाएगा एंड आई टोल्ड यू 5.2 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 5.2 पावर n. यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है वो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो आई गेट 5.2 n प्लस 1 माइनस n. और n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? n प्लस 1 और इसके आगे n फैक्टोरियल लगा देते हैं. सही है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है इसको कैसे करते हैं, एंड उसी तरह आप भी करेंगे एंड यू विल गेट दिस. तो n is less than 4.2 बनेगा. What is the largest possible value of n? So the largest possible value of n is 4. So yeah, question number 3 पे आ जाते हैं. The random variable a has the distribution a1 and a2 independent of this. ये थोड़ा सा जो related है वो linear combination of variables से related है, but let's just do it. Yeah, n plus 1 factorial is n plus 1 into n factorial. I wrote that right. The random variable a has a Poisson distribution 1.5. a1 and a2 are independent values of a. Find probability of a1 plus a2. तो अगर मैं लैम्डा पूछूं तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 3. सही है, तो इनका टोटल का जो लैम्डा है वो 3 हो गया है. तो मैं कहूँगा कि टोटल लैम्डा 3 से मुझे किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 0 और 1 की. तो e पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा e पावर माइनस 0.199. पार्ट बी में वो कहता है गिवन दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द गिवन कंडीशन दैट आई एम लुकिंग एट? वो गिवन कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस a2 शुड बी लेस देन. सही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 शुड बी इक्वल्स टू 1. अच्छा, यहाँ पे थोड़े से शायद केसेस बनाने पड़ेंगे. लेट्स लुक एट दैट. पहले डिनोमिनेटर फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो होगा इस केस में वो 0.199 होगा. सही है, और a1 इक्वल्स टू 1 रखना है हमें न्यूमरेटर के लिए. तो इफ a1 is 1 and they both have to be collectively less than 2. सही है, तो इसका मतलब कि a2 को 0 होना पड़ेगा. ओके, इफ दे हैव टू बी कलेक्टिवली लेस देन 2 तो a2 को 0 होना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इक्वल्स टू 1 बनेगी e पावर माइनस 1.5 e पावर माइनस 1.5, और दूसरा वाला बनेगा e पावर माइनस 1.5 सिर्फ. तो डिवाइड बाय आ जाएगा 0.199. लेट्स सी इफ वी गेट द करेक्ट आंसर. Please wait. We will be back shortly.
Please wait. We will be back shortly. Please wait. We will be back shortly. अच्छा मैं ये कैलकुलेट कर रहा था डिवाइडेड बाय पॉइंट सही ये सही आंसर आ रहा है 0.375 ओके फिर पार्ट सी में वो क्या कहते हैं गिव अ रीज़न वाई A1 माइनस A2 कैन नॉट हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि A1 की भी वैल्यूज़ जो हो सकती हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं और A2 की भी इस तरह 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती हैं तो कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगी विच इज़ not possible for a Poisson distribution. A Poisson distribution only has positive occurrences of a given variable. So because it takes on negative values, you cannot have a Poisson distribution then. सही है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईच वीक अ स्पोर्ट्स टीम plays one home match and one away match. In their home matches, they score goals at a constant rate of 2.11 goals per match. In their away matches, they score goals at a constant average rate of 0.8 goals per match. You may assume that goals are scored at random times and independently of one another. Okay. A week is chosen at random. Find the probability that the team scores a total of uh, 4 goals in their 2 matches. Total है तो टोटल का लैम्डा जो होगा वो ये हो जाएगा 2.9 एक होम मैच और एक अवे मैच का सही है पार्ट 1 में फिर प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो 4 गोल्स की निकालनी है तो ई पावर माइनस 2.9 पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल .162 Find the probability that the team scores a total of 4 goals with more goals scored in the home match than in the away match सही है टोटल ऑफ 4 गोल्स चाहिए विद मोर गोल्स स्कोर्ड इन द होम मैच देन इन द अवे मैच तो ये 4 और 0 हो सकता है और 3 और 1 हो सकता है सही तो होम की प्रोबेबिलिटी को अवे की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई एम गोइंग टू गेट होम की 4 मल्टीप्लाइड बाय अवे की 0 प्लस होम की 3 मल्टीप्लाइड बाय अवे का 1 ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ होम इक्वल्स टू 4 तो होम का जो लैम्डा था वो 2.1 था तो मैं कहूँगा ई पावर माइनस 2.1 इंटू 2.1 पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू ई पावर माइनस 0.8 हो गया प्लस ई पावर माइनस 2.1 इंटू 2.1 क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल और इसका 1 चाहिए ना तो 0.8 ई पावर माइनस 8 so let's calculate all of that it's not time consuming calculation but I write it down but e power 2 point
I'm getting 0.1125, which is 0.113. Okay, and then फिर मैंने कहा कि use a suitable approximating distribution to find the probability that the team scores fewer than 25 goals in 10 randomly chosen weeks. सही है। एक तो पूरे टोटल की बात हो रही है, होमर अवे अलग अलग नहीं है, एंड एक वीक में 2.9 थे, तो 10 वीक्स में लैम्डा फॉर 10 वीक्स is 29. लैम्डा इज ग्रेटर देन 15, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी चाहिए। और मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फाइंड करना है? आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम स्कोर्स फ्यूअर देन 25 गोल्स, so total is less than 25. Okay, I will first do a continuity correction, then I will convert it into a z value. So here 24.5 minus 29. Getting minus 0.835, 836. So 5 minus 0.1 minus 5 point. 0.836 देख लेते हैं, 837,967 plus 15, 7983. One two zero two. सही है, ये भी सही हो गया। Justify the use of approximation distribution in part B. So lambda is greater, 29 is greater than 15. That's the only thing that you need. Poisson to normal is an obvious conversion. सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं the random variable x has the Poisson distribution 2.3. Find x is between 2 and 4, तो मुझे निकालनी है probability of 2, 3 and 4. So e power minus 2.3 into 2.3 square over 2 factorial plus e power minus 2.3 2.3 cube over 3 factorial plus e power minus 3 into 2.3 power 4 over 4 factorial. Point 916. यार है 0.07 नहीं कर दिया कैलकुलेट करने में। e power minus 2 e into squared over 2.
तो ये 0.585 मैंने कैलकुलेशन में पहले कुछ मिस्टेक कर दी थी। पार्ट टू कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ओके, दो इंडिपेंडेंट वैल्यूज मतलब लैम्डा डबल हो जाएगा, लैम्डा जो हो जाएगा वो 4.6 हो जाएगा, एंड टोटल का मुझे चाहिए इज़ ग्रेटर देन 2, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2। तो ये मैं लिखूँगा पूरा ई पावर माइनस 4.6 माइनस 6 ई पावर माइनस ई पावर माइनस 4.6 4.6 over factorial. Point 163. Say 1 minus 0.163, 0.837. The random variable s is the sum of 50 independent values of x. Use the suitable approximation distribution to find the probability of s less than or equals to 110. सही है, तो लैम्डा भी जो हो जाएगा वो 50 वैल्यूज़ का हो जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी 50 इंटू 2.3, ये आ रहा है 115। सही है, ये 115 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लेस देन इक्वल्स टू 10। अब मैंने कहा कि अगर मुझे लैम्डा ग्रेटर देन 15 है तो मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, and when I'm using the normal distribution I have to do a continuity correction. Minus 0.41 420 कर लेते हैं, 4196 आ रहा है, ये बन रहा है phi of minus 420.420 1 minus phi of 0.6628 0.337। सही है, ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हो जाएगा 0.337। Not going to be useful for O level right now, an A level math topic. Fourth, the random variable y has the Poisson distribution. This, given that probability of y equals to 3 and y equals to 5 are equal, find lambda. So let me quickly do that. Okay, e power minus lambda, lambda नहीं पता ना मुझे, lambda cube over 3 factorial equals to e power minus lambda, this is part 4 that I'm solving, into lambda power 5 over 5 factorial. 5 factorial over 3 factorial, lambda power 5 over lambda cube. तो लैम्डा स्क्वायर बन रहा है और 20 बन रहा है, तो लैम्डा इज रूट ऑफ 20, रूट ऑफ 20 4.47। Question number 6, an airline has found that on average 1 in 100 passengers do not arrive for each flight, and this occurs randomly. For one particular flight, the airline sells 403 tickets.
the plane only has room for 400 passengers. So the flight is overbooked if the number of passengers who do not arrive is less than 3. Okay. Overbooked कब होती है हम लिख लेते हैं overbooked होती है when number of passengers who do not arrive is less than 3. Okay. So overbooked तब होती है and x is the number of people who do not arrive. Do not arrive. Find the probability that overbooked है तो यानी मुझे probability of x less than 3 निकालनी है. अब इसमें n जो है वो पहले तो p निकाल लेते हैं. p is 1 out of 100. Okay. And n should be 403. भाई हमने 403 टिकट्स बेचे हैं तो मेरा लैम्डा क्या होना चाहिए 403 divided by 100 which is 4.03. I'm using a binomial to Poisson conversion. Okay, why? Because n is large and p is small. तो मुझे किस किस की probability निकालनी है 0 की 1 की और 2 की. That indicates that the flight is overbooked. Okay, so e power minus 4.03 plus 4.03 e power minus 4.03 plus 4.03 e power minus 4.03 to 4.03 square over 2 factorial. चेक करते हैं अगर हमारा आंसर सही आ रहा है तो distribution e variable to 4 point. I'm getting 0.234. Okay, question 7 पे आ जाते हैं. The numbers m and f of male and female students who leave a particular school each year to study engineering have means 3.1 and 0.8. State in context one condition for m to have a Poisson distribution. So males have a constant. It says a male leaving each year to study engineering have a constant mean. That is a condition that needs to be satisfied in order for it to have a Poisson distribution. तो बाद में बता देता है कि independent Poisson distributions हैं. Find the probability that the total number of students who leave to study engineering in a particular year is more than 3. So I want the total to be more than 3. So 1 minus probability of 0, 1, 2 and 3. तो e पावर अब टोटल का लैम्डा कितना हो जाएगा टोटल का लैम्डा हो जाएगा 3.9 तो 1 minus e power minus 3.9 minus 3.9 e power minus 3.9 plus e power minus 3.9 into 3.9 square over 2 factorial. सही है ये सब ट्रैक करते हैं 0.547. सही है फिर क्वेश्चन कहता है given that the total number of students who leave to study engineering in a particular year is more than 3. Given that cover the conditional probability हो जाएगी find the probability that no female students leave to study engineering in that year. Okay,
तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्ट 3 में, गिवन टोटल इज़ मोर देन 3, यानी डिनोमिनेटर में टोटल इज़ मोर देन 3, दैट मीन्स 0.547। फीमेल्स जो होनी चाहिए, द नो फीमेल स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल्स इक्वल्स टू 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब मेल कितने होने चाहिए, मेल ग्रेटर देन 3 होने चाहिए, तभी जाके दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई होंगी टोटल मोर देन 3 की। तो ये बन जाएगा ई पावर, फीमेल है 0.8, सो ई पावर माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 एंड 3 एज वेल। अब यही काम जो न्यूमरेटर में मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर मेल्स। मेल्स कितने थे, उनका लैम्डा था 3.1, तो मुझे यही सारी कहानी ई पावर माइनस 3 सही है। ये मैंने सारे लिख लिए हैं। आई थिंक स्क्रीन थोड़ी सी कट रही है, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो पहले हम एक निकाल लेते हैं। ये आ रहा है 0.624 और इसको मल्टीप्लाई करना है पावर माइनस 0. मेरे पास बन रहा है 0.16857, डिवाइड करना है 0.547 से, तो 0.308 इज दैट द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन है 9, 10, 10 तक है ना, 3 more questions to go. Okay, do this quickly then. A large number of spoons and forks made in a factory are inspected. It is found that 1% of the spoons and 1.5% of the forks are defective. A random sample of 140 items consisting of 80 spoons and 60 forks is chosen. Use the Poisson approximation to the binomial to find the probability that the sample contains at least one defective spoon and at least one defective. So S is greater than or equals to 1 multiplied by F is greater than or equals to 1. अब lambda for S is 0.01 into 80 and F का lambda जो है वो 0.015 into 60 है, 0.8, 0.9. बन रहा है 0.327। तो ये पार्ट 1 का आंसर सही है। फ्यूअर देन 3 डिफेक्टिव आइटम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल लेस देन 3। टोटल का लैम्डा क्या होगा, टोटल का लैम्डा होगा 0.8 प्लस 0.9 इज 1.7। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2, 3, 2। तो अभी मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग डाउन द फंक्शन, आई हैव रिटन डाउन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
Uh, 1.7, sorry, 7 नहीं, 2, 1.757 बन रहा है इसका आंसर. फिर the random variable x has the Poisson distribution this. It is given that probability of x equals to 1 p and probability of x equals to 2 is 1.5 p. Where p is a non-zero constant, find the value of lambda and the value of p. सही है. तो part 3 में lambda e power minus lambda is equals to p or e power minus lambda to lambda square over 2 factorial is 1.5 p. तो p की जगह p लगा देते हैं. ये बन रहा है 1.5 लैम्डा ई पावर माइनस. तो एक ये कैंसिल हो जाएगा. लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा. 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा. तो लैम्डा इक्वल्स टू 3. सही है, ये हो गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड हेंस द वैल्यू ऑफ पी. अच्छा, वैल्यू ऑफ पी भी निकालनी है तो ये बन जाएगा 3 ई पावर माइनस 3 इक्वल्स टू पी. 3 ई पावर माइनस 0.149. ओके. June 1471. चलो. It says the following table shows the probability distributions from the random variable v and w. और फिर जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि for each of the variables v and w state how you can tell from its probability distribution that it does not have a Poisson distribution. v तो नहीं हो सकती. Why? Because v में जो है वो मुझे negative numbers नज़र आ रहे. Okay, I think that's the correct answer to this. You want फिर 8. मैं verify भी कर देता हूँ because it's attached है. तो ये वी कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज़. एक ये हो गया एंड डब्ल्यू में जो है वो डेसिमल आ गया है. तो पॉइसन क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो इसमें नॉन इंटीजर वैल्यूज़ नहीं आती. आपके सक्सेस आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इट हैज़ टू बी अ होल नंबर. ओके, लेट्स सी इफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट. होगा डिफरेंट तो मैं सॉल्व कर दूंगा. आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू द वन दैट यू जस्ट डिड. तो आई डोंट थिंक इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है. आई थिंक यू pretty self-explanatory. Okay, the random variable y has the distribution this where mu is greater than 30. Use a suitable approximation. It is found that this is correct to 2 decimal places. Find mu. सही है, तो इसमें पहले कंटिन्यूटी करेक्शन करनी पड़ेगी और फिर हम कहेंगे कि क्योंकि म्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी चाहिए. ये रिवर्स रीडिंग का सवाल है इसलिए मैं एक करके दिखा रहा हूँ. तो 1 minus phi of .4207.
अच्छा 0.4207 को मैं फाइन इन्वर्ट करूँगा. आई एम probably going to just use my calculator to do that. It's not 7. यार है -0.200. 0.4207 का रिवर्स मैं वेरीफाई कर लेता हूँ. 5793 5793 ये रहा. ये 0.2 यहीं पे आ रहा है. सही है. तो ये हो गया 40.5 माइनस म्यू ओवर रूट ऑफ म्यू. ये बन गया -0.200 इक्वल्स टू 40.5 माइनस म्यू ओवर रूट ऑफ म्यू. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -0.2 बन जाएगा. म्यू सॉरी स्क्वायरिंग रूट ऑफ म्यू सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सही है. या फिर आप जो है वो क्वाड्रेटिक बना लें. आई थिंक क्वाड्रेटिक बना लें तो ज़्यादा आसान रहता है. -0.2 रूट ऑफ म्यू. तो म्यू को जो है वो एक्स ले लेते हैं. तो ये बनेगा -0.2x. रूट ऑफ म्यू को एक्स ले लेते हैं. सॉरी रूट ऑफ म्यू को एक्स ले लेते हैं. तो ये बन जाएगा 40.5 माइनस एक्स स्क्वायर्ड. तो एक्स स्क्वायर्ड तो ये क्वाड्रेटिक लगेगा. लंबा ही हो गया सवाल ये. 1 -0.2 माइनस 40.6.46. एक आ रहा है 6.46 और दूसरा आ रहा है -6.26. तो ये दोनों रूट ऑफ म्यू की वैल्यूज़ हैं. अब रूट ऑफ म्यू का रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता तो नॉट पॉसिबल. तो 6.46 को जो है वो हम स्क्वायर कर लेते हैं. ये बन रहा है 41.7. इज दैट द राइट आंसर? या 41.8 आ रहा है. राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया है बिकॉज मैंने ऊपर राउंड ऑफ कर दिया था. 6467. मैं कोई लिखने में शायद गलती कर दी है. 6.4647. सही है. वो मैंने प्रीमेच्योर राउंडिंग ऑफ की हुई है तो उसकी वजह से डिफरेंस आ गया है. Just fine for now. Let's look at the last one that I have. Let's see if this is different. State two assumptions दी हुई हैं. So yeah, at least one patient. This is also easy. Okay, and the last one is a suitable approximation. So it's more like a normal distribution. Nothing unusual about this question. If you still find it difficult, drop a comment and I will solve it. Thank you for watching. That's the end of the live stream.